India has about 4% of entire world's freshwater resources and has about 20 river basins. Groundwater in India caters to about 85% of the rural demand, 55% urban requirements, and more than 60% of our irrigation needs. In spite of all this and plentiful of rains, rivers, and snow-clad mountains, India is in a state of acute water stress and facing its worst water crisis in the history. The question is, why? And what can we do about it? Next, Indians living in remote villages in the Himalayas are facing a water crisis. इस वक्त दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी यानी करीब 400 करोड़ लोगों के जीवन में पानी का संकट है। Parched for every drop, there is a long wait for water tankers to fill up dry wells. पानी की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि 40% of all of India could have no water in their groundwater and no access to drinking water. India has a growing population of approximately 1.4 billion that contributes to 18% of world's total population, with only 4% of world's freshwater supply to cater the demands. India remains in constant state of water distress. Now this is alarming because according to a report by Niti Aayog, currently 600 million people in India face high to extreme water stress and about 2 million people die from inadequate access to safe water. The country's water demand is projected to be twice than the available supply. These projections demands for a closer look into the matter. This is Mr. Gaurav Prakash Raja, founder of startup Ridge Environment Consultants, which has been awarded with Runners-Up National Startup Award and UNESCO Water Digest Award for Best Initiative in Water Harvesting. Mr. Raja and his team has been voicing for many environmental related issues and offers a wide range of advisory and environmental engineering services. And this is his take on these current water crisis. Water is life, जल ही जीवन है। ये चीज़ हम लोगों ने बहुत बार सुनी है, बहुत बार पढ़ी है। पानी इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर का 90% हिस्सा पानी का बना है। वैसे तो देखा जाए दुनिया में हर जगह पानी ही पानी है, हमारे समुंदर में, हमारी रिवर में, हमारी लेक में, बर्फ़ में, हर जगह। पर जो ह्यूमन काइंड के लिए, मैन काइंड के लिए जो यूजेबल वाटर है, जो एक्चुअली वो यूज़ करते हैं, वो सिर्फ फ्रेश वाटर, वो सिर्फ मीठा पानी है। आप इंडिया की बात की जाए, अभी भी कई साइंटिस्ट कई रिपोर्ट बोलते हैं कि आज से 20 से 30 साल के बाद हमारे काफ़ी सारे शहरों का ग्राउंड वाटर काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा या सूख जाएगा। हम हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हमारे हिमालयन इकोसिस्टम की बात करें, ये यहाँ से सारी नदियाँ निकलती है। दिस इज़ अ वाटर शेड ऑफ अ कंप्लीट सिविलाइजेशन, जो हमारी भारत की ये सभ्यता है। आप गंगा नदी देख लो, इंदुस नदी देख लो, सतलुज देख लीजिए, जो भी नदियाँ देखिए हिमालय से निकल रही है। बट यहाँ पर भी जितने ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे सारे के सारे सूखे जा रहे हैं। बट ये बड़ी गंभीरता का विषय है कि हम आज की डेट में मार्स पे जाने की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस्ड हो चुके हैं, मेडिकल साइंस में भी, बट हम लोग अपनी जो बेसिक मूलभूत सुविधा है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो खाना हो, उसमें हम नीचे 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 या प्रॉब्लम या क्राइसिस की तरफ जाते जा रहे हैं। India receives an average of 400 million hectare meters of rain and snowfall each year. This water should be more than enough to put away the water needs of a large portion of 1.38 billion people residing here if done properly. Well, unfortunately, 65% of this rainwater ends up wasted in sea, hence becoming useless. With the mindset of harvesting this rainwater, a solution was brought forward by Ridge Environment Consultants to not only harvest rainwater but to also educate people who are in dire need of understanding the use of rainwater and how to recycle it. In this project, the plan was to equip and introduce water harvesting plants to as many schools as possible and potentially conserve around 1.5 lakhs to 2 lakhs litre of water from the 2,000 square feet of area from different schools.
and not just collecting rainwater, but recycling it for the human use. सबसे बड़ा सोर्स, द रियल सोर्स ऑफ द जो वाटर है वो रेन है। रेन का वाटर जो परकोलेशन हो रहा है, जो जमीन में जा रहा है, बहुत ज़्यादा है, पर उसके अलावा इसका जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा है। अगर किसी इंस्टीट्यूट में, किसी जगह पर, किसी संस्थान में अगर हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा तो हम एटलीस्ट उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वहीं से पूरा कर लेंगे, क्योंकि पानी का जो मेन जो सोर्स है वो तो रेन। हाँ जी। तो क्यों ना उस सोर्स से ही हम पानी को बचा लें, रादर देन कि वो पानी कहीं आगे चला जाए और वहां हम कोशिश करें कि हम इसको बचाएं। और मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने वाली है और ज्यादा उसमें इकोनॉमी भी उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए। It's not that if it's being started in schools, it will not happen in other institutions. Perhaps why schools were chosen is because it's a collection of a large number of individuals. Children come every day to school and there's a, mandatory minimum water requirement over there, Secondly, the message you spread across through children is imbibed more quickly and it is passed on to the family better. Because the younger we, start sensitizing people, the better the message is inculcated and the better it is carried forward. Because again, sustainability is an intergenerational thing. Definitely. And habits form early on. So if we are able to intervene at this stage when children are in the learning phase, I think it's going to be the most sustainable. But at the same time, with respect to your question, it's an endeavor which is ongoing and will always continue to take place. So it's not something that these interventions are only focused for one or two institutions. These should ideally, be happening everywhere. And I think it's the first step towards that direction. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी का जल संग्रह एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं लगता किसी को बतानी चाहिए। हमारे बड़े पूर्वज 100, 200, 500 साल पहले किसी भी घर पे करते थे। आज इसी चीज़ को बताने के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मूलभूत को बताने के लिए ही हमें एक अवेयरनेस करनी पड़ती है। गवर्नमेंट बताते हैं और हम बताते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अगर देखा जाए, अगर एक छोटा सा एरिया है, मान लीजिए 100 स्क्वायर मीटर का एरिया है, 100 गज का एरिया है, 1000, और वहाँ पे आपका लगभग 50 से मिनट की बारिश 1 घंटे में आती है, तो लगभग आप एक घंटे में लगभग 5000 लीटर पानी आप इकट्ठा कर सकते हैं एक तेज बारिश में। तो कम से कम अगर आप 2,500-3 हज़ार लीटर भी पानी वहाँ से इकट्ठा करते हैं तो कुछ भी नहीं है, तो 3-4 दिन के काम हमारा एक छोटी परिवार का चल जाता है। This initiative took place in the government schools of Nudan, Purang and Sujanpur area of Hamirpur district and was only possible with the help of district administration and ICICI Foundation. Yes, water harvesting is an ancient practice and traditionally we should know how to achieve results efficiently. But the harsh reality is that it is not a common practice anymore and majority of the population does not understand how to harvest rainwater in the habitat they live in. For this issue, the Ridge Environmental Consultants has a proprietary 9-step process to help achieve water harvesting in any environment or conditions with maximum efficiency. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बेसिकली 2 ही साइंस होती है सबसे ज़्यादा। एक होता है आपका फिल्ट्रेशन क्या है, और दूसरा ये है कि आप कैच किस एरिया से कर रहे हो और उसको कैच वाले जो वाटर है उसको आप हार्वेस्ट कैसे कर रहे हो। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में हमने स्कूल की बिल्डिंग के रूफटॉप एरिया को ही सिलेक्ट किया है और वहाँ से जो पानी वेस्ट जा रहा था उसको डाउन पाइप्स के जरिए हमने सूटेबल स्टोरेज टैंक में कलेक्ट किया है। और कलेक्ट करने से पहले प्री फिल्टर्स लगाए, तो हमने इसमें प्री फिल्टर्स यूज किए हैं सूटेबल, जो अराउंड लीफ, डेब्रिस और 250 माइक्रोन सब मड को रिमूव कर देता है। उसके बाद पानी जब आपका टैंक्स में स्टोर होता है और उसके बाद हमारा पोस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम है, तो उसमें आपका उस पानी को आप पीने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए हमारा 4 स्टेज फिल्ट्रेशन हम यूज करते हैं। इसके अंदर मल्टीग्रेड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, कार्ट्रिज फिल्टर और लास्ट में अल्ट्रावायलेट लाइट। So these kind of filters we use, और इसमें स्पेशली मल्टीग्रेड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, ये सेल्फ क्लीनिंग फिल्टर है। इसमें आपको वेरी फ्रीक्वेंटली कोई कार्ट्रिज, कैंडल्स या कुछ इस टाइप का कंपोनेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि मेंटेनेंस लो होती है, आप इसको सेल्फ क्लीन कर सकते हो। और एक स्कूल की सेटिंग में जहाँ पे, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल की सेटिंग में जहाँ पे मेंटेनेंस इज एन इशू, तो वहाँ ईज ऑफ मेंटेनेंस पॉसिबल रहती है। सो वो पोस्ट फिल्ट्रेशन के बाद पानी आपका फिट फॉर पोर्टेबल यूज, ड्रिंकिंग यूज के लिए हो जाता है, जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं। With the constant effort from all the parties involved in this project, astonishing results were achieved. In merely 58 days, almost 62 schools were equipped with a working water harvesting plant. Subsequently, in order to celebrate and commemorate 75 years of India's independence and the glorious history of its people, culture and achievements, in line with the national initiative of Government of India, Azadi Ka Amrit Mahotsav, a total of 75 schools were designed and implemented with rich rainwater harvesting system. India presently has a population that is only increasing. For our future generation to relish the natural resources the way we do, we need to not just educate them, but also equip them with ground solutions. After all, in the end, water and life is synonymous. There is no social equality without equal access to water, and no life altogether without water.